So would you recommend this branch to upcoming students जो इस branch के लिए सोच रहे हैं? What is your primary goal? If those things are set right in front of you, then only you can understand कि whether this branch is made for you or not. Does this branch have a super speciality also? It was not able to contain in pathology branch, तो उन्होंने इसको as a terminal super speciality branch बना दिया जिसकी beyond आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. So आपके हिसाब से इस branch की ज़रूरत नहीं है Tier 3 cities के अंदर? नहीं, ज़रूरत तो है. Because see, But nobody cares. Where do you see this branch going in the next 10 years? in next 10 years, I think the demand might slow down a little bit. Doesn't DM Himat actually overlap with yours? To some extent, yes. उनके पास अथॉरिटी होती है कि पेशेंट को आप ट्रीट करो. So what is the normal salary structure of a transfusion specialist? Hey guys, welcome to the Nachiket Bhatia show, now sponsored by Curenza, powering India's healthcare hiring. Find your dream medical job at curenza.com. Transfusion medicine. Yes, that is the topic for today's conversation. The branch nobody knows much. Internet doesn't give the right information, and for that we have found the right person. She is a transfusion medicine postgraduate and currently the head of department at RL Raheja Fortis Hospital, Mumbai. Trust me guys, she has given such an honest explanation what this branch does. Whether there is any future about this branch, what is the salary structure, and what really the branch specialists do in our country. And to be frank, you will be surprised to know the truth. She is also an Amazon bestseller book writer. She wrote Be Super Happy, which has crossed a sale of more than 1 lakh copies in India and abroad. Let's put our hands together and let's welcome Dr. Afreen Kotadia. Welcome Dr. Afreen to the Nachiket Bhatia show. Thank you so much. Dr. Afreen, you are a transfusion medicine specialist, a branch genuinely nobody knows about. I don't know about it. So I'm going to ask you a lot of questions. Absolutely. Okay, it's going to be a very educative podcast. So before that, I would like to know your journey. How did you enter the field of medicine? What was your journey after that? So thank you so much for inviting me, Dr. Nachiket. It's an honest pleasure. About my journey, I would tell you something very honestly. हर बार ऐसा नहीं होता कि हम कोई चीज़ चूज़ करते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें चूज़ कर लेती है. शुरुआत में शायद वो हमें अच्छी नहीं लगती है, बट सडनली व्हेन यू गेट इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट यू अंडरस्टैंड कि शायद ये हम इसी चीज़ के लिए बने हैं. सो दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन. बेसिकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट स्टार्टेड आउट एज आई took my field when I was choosing through the rounds and all, and this field was remaining at my seat, although my rank was good, but then I saw Tata's name and I was like, Tata mein to acha hi hoga, so let's just give it a go. And the name and everything sounded lucrative because the whole branch as such was termed as MD immunohematology and blood transfusion या transfusion medicine, जो भी कह लो. So I was like, okay, it sounds lucrative, let's go ahead. Because बाकी सारे जो branches बचे थे मेरे rank पे were all majority non-clinical and anesthesia and all those. So I was like, नहीं, उससे बेहतर तो यही ठीक लग रहा है, so let's go ahead. Even though I was clueless at that time, but I was like, let's give it a go. As compared to other branches, this looks fine, so let's do it. And then when I got into it, I saw that there was so much to do. I mean, शायद दूसरों को ऐसा लगता होगा कि ये क्या है, ब्लड बैंकिंग तो है, बट बेसिकली इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट. इसमें होता क्या है कि मैंने अगर कोई डोनर का डोनेशन ले लिया, लेकिन वो ब्लड का मैं कर क्या रही हूँ? I need to ensure that the blood is safe to give to any patient irrespective of the time that I'm giving during its shelf life. So the processing, the storage, the dispensing, even the transfusion part, everything comes under my purview. So उसको मुझे पूरी तरीके से safe बनाना है, जिसको हम vein to vein transfusion chain कहते हैं. And the complete onus lies on me. अगर मैंने उसमें एक चूक भी कर दी और एक patient को भी उसमें दिक्कत आ गई, the entire system falls apart. And then there are a lot of regulatory authorities who give us a lot of guidelines to follow. So we are audited and inspected every year annually without fail by the FDA. We have to ensure that each and every criteria laid down by the guidelines and the government of India are met without fail. Otherwise, we get lots of non-conformances and show cause notices and whatnot. So, इसलिए
it's not just about blood banking, it's about administration, regulatory compliances. Then अब तो और बढ़ चढ़ के इसमें एडवांस सेलुलर थेरेपीज भी आ चुकी हैं, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को जिस स्पेसिफिक ब्लड के सेल की ज़रूरत होती है, द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट इज समथिंग दैट वी विल डिस्पेंस. अगर उनको WBC चाहिए तो हम सिर्फ WBC निकाल के देंगे, जिसको हम ग्रैनुलोसाइटोफेरेसिस से लेंगे. सिर्फ प्लेटलेट्स चाहिए तो प्लेटलेट फेरेसिस. बेसिकली द apheresis is the term, is we are taking something from the body. That something would be any component of the blood using a cell separator machine. तो ये सारा हमने ही करना है. That when you compile everything, it becomes a huge branch, but the only drawback here is we are operating in the background. तो बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता कि बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है. उनको सिर्फ तब समझ में आता है when something goes wrong. So that's the whole story behind it. So visibility का issue है, but otherwise it's a great branch, I would say. So you are the kind of back-end heroes. Absolutely. I mean, think about it. See, अगर एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, you want to set up a tertiary care center in any place, सिटी हो या रूरल एरिया हो, कहीं पे भी हो, you want tertiary centers means you have all sorts of departments in that hospital, right? It could be medical, surgical, ICU, everything. Now tell me, which surgery can be done without blood? Can you run any OTs without blood? Even though bloodless surgeries होती है अभी, blood backup में तो चाहिए ना, कि अगर by chance, God forbid, one artery also if you nick, what happens to the patient if there is no blood backup? And that too not just 1 or 2 units, it could be number of units. And what if that patient turns out to be a negative blood group? सियाप्पा ही हो जाएगा. So for that purpose, blood center is inevitably necessary for that hospital. Now tell me, what if you have an emergency department, an ICU department? There are patients who have come with accidents and all, उनको भी तो blood की ज़रूरत पड़ेगी. If there are certain emergencies wherein they've sustained some fractures or some sudden blood loss, blood after all, उसके बिना कोई, we don't have any alternatives as such. तो फिर करे तो करे क्या? Without blood bank, do you have any other option? No, not at all. And बाकी के जो medical fields हैं वॉर्ड बेस्ड, जैसे स्किन है, पीडियाट्रिक्स है, मेडिसिन है, वट एवर यू से, जिसमें ऐसा सर्जरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट उनको अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए भी तो ब्लड ही लगेगा. तो कैन यू रन एनी हॉस्पिटल विदाउट अ ब्लड सेंटर, अ रोबस्ट ब्लड सेंटर विदाउट adequate amount of blood on the stock, on the shelves, right? So all of these things is like, हम अगर नहीं हैं तो आपका हॉस्पिटल चल नहीं सकता. एक दिन क्या, 1 घंटा भी अगर मैंने ब्लड सेंटर बंद कर दिया ना, जस्ट कि चलो आज मेरा मूड नहीं कर रहा है, ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन अगर सपोज समथिंग गोज रॉन्ग इन माई सेंटर, दैट हॉस्पिटल अफरा तफरी मच जाएगी. पीपल विल बी लाइक कि यहाँ का ब्लड सेंटर नहीं चल रहा, पेशेंट्स को भनक लग गई. देन यू नो हाउ ईजिली थिंग्स गेट सेंसेशनलाइज दीज डेज. सो the word gets out, then the media gets mobilized, then media trials, you know how it goes. So kahin na kahin everything goes downhill if at all our center is not functioning to the optimum. So that is the thing. It sounds so intense. It is actually. People don't understand yet, but it is. What kind of show cause notices you get, let's suppose, if you do not pass the FDA approvals? In the FDA offices, in front of the joint commissioners and all, we are called for a formal hearing कि आप आइए और हमको एक्सप्लेन करिए कि ये एक स्पेसिफिक चीज़ जो हमको चाहिए थी, सपोज इट कुड बी अ QC क्राइटेरियाज विच हैव नॉट बीन मेट, या फिर कोई कंप्लायंसेस थे जो हमने एडिक्वेटली क्लोज नहीं किए. सो आप आइए और इसका हमको एक पुख्ता सबूत दीजिए कि आपका सेंटर इसके लिए क्या कर रहा है. And we go to the offices, one-on-one joint commissioner के सामने वो hearing हो जाती है, along with all the requisite authorities and officials. And then if the joint commissioner is satisfied with what closures we've given, then they will close it and give a letter accordingly to us. Otherwise, they could give any necessary action to us, like suspension for a few days, या फिर some penalties and all those things. So that's how it goes. Doctors and paramedical associates. So this tool is a blessing in disguise for all healthcare professionals. Are you still confused how much your salary should be? Curenza has created a very interesting tool in which you can feed your experience, your age, your region,
and the tool shall tell you what should be your apt salary. We have collected data from all across country by talking to different ages of professionals, and we have got the most precise data in the country to decide your salary. It's superb. Go and try it now. It's simply available at Curenza.com. Yes, powering India's healthcare hiring. Basically, you're treated as a criminal if you do not follow the protocols. आवर सेंटर इज लाइक ऐसे समझ लीजिए एक छोटा सा हॉस्पिटल के अंदर ही एक सेपरेट यूनिट सा चल रहा है जिसको बहुत हेविली रेगुलेट किया जाता है, जिसके ऊपर हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ का भी कोई जोर नहीं होता है. हमको एक गाइडलाइंस ऐसी बना के दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि हर एक स्पेसिफिक कमरे का डायमेंशन तक दिया गया है. इफ़ यू डोंट फॉलो दैट, if the layout is not made in such a way that the regulatory authorities are okay with as per the laid down criteria, then they can definitely do these kind of show cause notices and make us change the entire architecture of the place. But that's not your responsibility. That's the hospital's responsibility. Yes, exactly. So through us only we have to communicate it to the management. But पहले चपेटे में हम ही आते हैं because we are the ones facing that inspection. ये तो गलत बात हो गई. क्या करें? That's how it is. The system is made in such a way. The management people are in the background. They will help us when required. But पहले first responders are us only. तो इसको डिटेल में बात करते हैं. This is like making a scapegoat out of a doctor. I wouldn't say that. I mean, see. नहीं, जैसे कि आप ज्वाइन करने से पहले आप इंची टेप लेके चेक थोड़ा ना करोगे कि ये एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं है. आप तो एम्प्लॉय हो ना. Yeah, but I'll tell you something. कोई भी ब्लड बैंक अगर सेटअप भी करना होता है ना, तो भी उसके जो बेस लाइसेंस हमको जो लेना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो तभी मिल पाता है जब आपने ब्लूप्रिंट उस तरीके से बनाया है जो अपने सारे डायमेंशंस को मीट करता है. ओनली देन दे विल इशू यू अ प्रिलिमिनरी license. Then you will get all the equipments and staff and all the requisite furniture and consumables and everything, and then they will come for a final inspection of the entire place to see कि आपके पास जो जो चीज़ें एक ब्लड सेंटर को चलाने के लिए चाहिए वो सब कुछ ही अवेलेबल है. So now your setup is robust, and then they will give you a final license to start running that place. So then it will work. हाँ, but then from time to time they will make alterations in the changes. जो अगर guidelines में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा ही चेंज किया, then जैसे ही वो changes आए वैसे ही we have to comply with them at our centers without them needing to push us. When you say your center, but you don't own that center. I don't own that center, but I am the in charge of that place. But let's suppose the management is not doing it, then what? Then the management will have to answer the officials, because then I can pass on the onus कि I'm not owning that place. But जो management है, जो own करता है, all the necessary authorities who are capable of taking decisions about this thing, if they are not taking the necessary decisions as required by the government of India, then they will be answerable. That's the same thing. Like, we can't have a further say in that. So much regulation. Like, does it make it difficult to get a job in these kind of setups? In this branch, basically. Job mein, see, I'll tell you, job is a very different aspect altogether. Now, think about it this way. All over India, we have around 4,000, 4,500 blood centers ऐसे कुछ है. And these are distributed among tier 1, 2, 3 cities and all. जैसे जैसे आप cities की तरफ आएंगे, अवेयरनेस बढ़ती है, राइट? और जैसे जैसे आप रूरल एरियाज की तरफ जाएंगे, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट आते हैं, राइट? मान लीजिए अगर मैं एक अच्छी सिटी से शुरुआत कर रही हूँ, आई एम अ ट्रेन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट, आई वांट टू गेट अ जॉब इन अ tier 1 सिटी बिकॉज दैट पेज मी बेटर. Okay, now the biggest challenge in these places would not just be the regulatory authorities, but also the amount of workload that they might put on us, because their QC criteria are strict, the authorities are well aware, they want us to follow everything to the T. जैसे टेक्स्ट बुक्स में और गाइडलाइंस में दिया हुआ है, एग्जैक्टली आप वैसा ही फॉलो करो. अगर एक भी लाइन टस से मस हो गई, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स में अगर दिया हुआ है ऐसा करना है, लेकिन आपने
मे बी स्लाइट डेविएशन कर दिया, देन यू कैन डेफिनेटली गेट एन एनसी ऑन दैट. डायरेक्टली शो कॉज नोटिस नहीं मिलता है. पहले दे गिव अस अ लिस्ट ऑफ क्वेरीज जिसको हम एनसीज या नॉन कन्फर्मेंसेस कहते हैं. उसको विद इन 1 मंथ सॉल्व करना होता है. अगर विद इन 1 मंथ एडिक्वेटली सॉल्व नहीं कर पाए फिर शो कॉज नोटिस पे बात जाती है. सो नाउ I know कि I have to be very theoretically accurate if I have to work in these places and also have a good skill set, because they will not just expect the bookish knowledge but they will also expect me to perform. AFRSS जो चीज़ है ना, ऐसा समझ लीजिए जैसे आप कोई सर्जन्स को ट्रेन कर रहे हैं थर्निया को ऑपरेशन करने के लिए, हाइड्रोसील ऑपरेशन करने के लिए. दोज आर प्रॉपर सर्जरीज जिसको स्टार्ट टू फिनिश अ सर्जन विल सी थ्रू. Similarly, apheresis is a procedure wherein a donor is entrusting his entire body to me for say 1 घंटे से लेके 6 घंटे तक भी हो सकता है वो, depending upon the type of procedure that I'm doing on him. Okay, and these are not just patient procedures, these are donor procedures. मतलब healthy आदमी से लेके diseased आदमी तक भी. अब जो diseased patients होते हैं, they have to have their faith on us because we are helping them out somehow. But donors are हेल्दी, उनकी हेल्थ के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते. प्लस दे आर अवेयर, क्योंकि उनका अवेयर नहीं होता तो वो खुद से आते ही नहीं हमारे पास ये डोनेशन प्रोसीजर करने. सो दे आर वेरी वेल नोटिंग डाउन ईच एंड एवरी मूव दैट वी आर डूइंग, एंड इफ एट ऑल वी डेविएट फ्रॉम थिंग्स देन इट माइट एज वेल लैंड अस इनटू लिटिगेशंस. सो वो हिसाब से वी हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट इन डूइंग व्हाट वी आर डूइंग. तो ये टियर 1 सिटीज़ की बात हो गई. जैसे जैसे हम टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ की तरफ जाते हैं ना, एफेरेसिस की थोड़ी डिमांड कम हो जाती है. रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ माइट गेट अ लिटिल लैक्स्ड बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस एंड एवरीथिंग. और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट की इतनी भी गरज नहीं होती बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स में ऐसा किया था कि जब हम ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट इतने सारे नहीं हुए थे इन द कंट्री, तब तक भी उन्होंने क्राइटेरिया, और अभी तक भी है, ऐसा बना के रखा है कि एमडी पैथोलॉजिस्ट, डीएनबी पैथोलॉजिस्ट, डिप्लोमा पैथोलॉजिस्ट जो कर चुके हैं पास आउट, इवन दे कैन अप्लाई फॉर आवर पोस्ट. And even MBBS people who are trained 1 or 2 years in blood bank, they can also be a blood transfusion officer or medical officer in charges of a blood center if at all your criteria is being met. कि चलो कोई MBBS भी देख लेगा क्योंकि वो साइनिंग अथॉरिटी है, ही इज़ अ डॉक्टर आफ्टर ऑल, एंड आपको एफेरेसिस की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज रूरल सिटीज़ में जैसे जैसे जाएंगे वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट कि वहाँ पे बहुत भारी भरकम हम स्टेम सेल प्रोसीजर्स कर रहे हैं या कार्टी सेल प्रोसीजर्स कर रहे हैं, वहाँ नहीं होने वाला. आई डोंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन वेरी सून. तो वहाँ पे MBBS से भी काम चल जाएगा. ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट अगर वहाँ पे जाएगा भी तो ही माइट नॉट गेट द काइंड ऑफ पे दैट ही इज़ एक्सपेक्टिंग. तो वो हिसाब से दे माइट नॉट गो देयर ओनली. तो ये जो आप 4500 का मैंने एक आंकड़ा बताया मोटा मोटा, इतने जो ब्लड सेंटर्स हैं ना, अगर आप उसमें देख लो टियर 1 सिटीज़ में आपको सपोज मोटा मोटा 1000 to 1500 तक ब्लड सेंटर्स मिल जाएंगे. टियर 2 सिटीज़ में अराउंड 2000 तक मिल जाएंगे, और बाकी सारे टियर 3 रूरल प्लेसेस, छोटे मोटे ब्लड सेंटर्स एंड ऑल. तो आप सोचिए कि वेयर डू ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट गो व्हेन ऑलरेडी बहुत सारे लोग उनको लेना नहीं चाहते क्योंकि 3 टियर सिटीज़ में उनकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है. प्लस उनका काम पैथोलॉजिस्ट या MBBS से भी चल जाता है, सो दे आर वेल इन कॉम्पिटिशन विद अस. सो वेयर डू ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट गो? सो उनको एक्सपर्टीज़ की वजह से नहीं लिया जाएगा ऐसा नहीं है, उनकी ज़रूरत भी तो होनी चाहिए ना. दैट इज़ समथिंग दैट रियली बीट्स मी कि वी आर पुटिंग आउट अराउंड 200-250 स्पेशलिस्ट ईच ईयर. सारा मिला लो आप, DNB, MD, डिप्लोमा, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट पास आउट्स ईच ईयर. Up till how many years you will keeping them, training, और फिर उसके बाद में आप उनको डालोगे कहाँ जब उनकी डिमांड ही नहीं होगी. So I did a survey recently, एक national survey जैसा आप कह लो, wherein I asked through a set of questionnaire all the young and old transfusion medicine specialists within our country to tell me what are the core problems that they are facing in the practice of transfusion services. Majority of them told me that there are 2 main problems. जॉब का इशू अभी फ़िलहाल उतना नहीं है, शायद फ्यूचर में हो, लेकिन अभी मेन उनको जो बात खलती है दैट इज़ द विजिबिलिटी प्रॉब्लम.
क्योंकि आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट दैट वी आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड, हम दिख के नहीं आते. हमारे ब्लड सेंटर में जो भी हमने सेफ ब्लड इकट्ठा किया वो जैसे जैसे उनको लगता है हम दे सकते हैं. लेकिन बियॉन्ड दैट द क्लिनिशियंस, द हॉस्पिटल अथॉरिटीज एंड ऑल, दे थिंक दैट उसमें कौन सी बड़ी बात है, यू नो. सो दे डोंट रियली रिगार्ड अस एज यू नो बहुत कोई भारी भरकम क्लिनिशियन है या कोई कंसल्टेंट सा आदमी है, यू नो. वो एक ओहदे का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है. सो although when they come and see and sit in my chair and एक बार वो सारा काम करके दिखाएं जो मैं एक्चुअली करती हूँ साल भर में, probably that is when they'll understand. But then how do you think that is going to happen? I don't think that will happen. People don't have that much time to leave their work and come and sit and see कि मैं क्या करती हूँ. वो लोग तो बाहर से जज करके चले जाएंगे. So किया क्या जाए? How does anyone make them understand? Because we are not doing OPDs. We are not taking care of inpatients. We are in our center giving you blood as and when required. Not just blood, any kind of blood components. Red blood cells, platelets, plasma, cryoprecipitate, and all the specialized products if at all I have the services available. तो उन लोगों की नज़र में मैं सिर्फ ब्लड प्रोवाइड करने वाली डॉक्टर हूँ, nothing more than that. So वो एक visibility issue है. Second issue that they have very vividly pointed out in the survey is the salary disparity. Because obviously when you go from tier 1 cities, tier 2, tier 3, the amount of work that they might put on you, based on that they will pay you. Now for example, एक कोई transfusion medicine specialist है, वो belong करता है tier 3 city से, लेकिन उसने ट्रेनिंग ले ली. अब उसको वापस अपने गांव जाके अगर प्रैक्टिस करना है, ब्लड सेंटर्स वहाँ पे भी है, बट ही गोज देयर, बट ही इज नॉट गोना गेट दैट मच ऑफ पे. सो हु विल वांट टू गो देयर एंड वर्क? So what is the normal salary structure of a transfusion specialist? Like immediately after MD or maybe DNB, 10 years down the line and 20 years down the line? अगर कोई पास आउट होता है मेजरली, तो ऐसे मान लीजिए कि मेट्रो सिटीज़ में आपको मिल जाएगा अराउंड 1 to 1.5 lakhs. एट मे बी 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, you will get around 2.5 lakhs. And beyond 10 years and all, you might get incrementally more, जो भी आप सोच लें, 3-4 लाख and all. But then that will go drastically less when you go from tier 2 cities to tier 3 cities. तो आपको अगर वो एरियाज में कम ही मिलने वाला है तो सारे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट tier 1 cities की तरफ ही जाने का सोचेंगे ना. तो what happens to those cities? What happens to increasing the robustness of blood centers and transfusion services in those places? वो कभी जा ही नहीं पाएंगे उस लेवल तक until and unless someone leaves the money out of the way and thinks कि नहीं मैं यहाँ जाके मैं ये करूँगा. How many such people do we find? I don't think. मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं उस तरफ और उनको ज़रूरत भी है वहाँ पे वो सब करने की. So आपके हिसाब से इस ब्रांच की जरूरत नहीं है tier 3 cities के अंदर? नहीं, ज़रूरत तो है, because see, But nobody cares. I would not say nobody cares, but वहाँ पे उस लेवल के बड़े हॉस्पिटल्स हैं ही नहीं कि वहाँ पे हम उतना सारा जगह डेडिकेट करके एक ब्लड सेंटर उस डायमेंशंस पे बना सके जो गवर्नमेंट ने लेट डाउन किए हैं. ठीक है, प्लस यू विल नीड दैट मच ऑफ स्टाफ, बिकॉज उन्होंने सिर्फ जगह का डायमेंशंस नहीं दिया है, उन्होंने मैन पावर का क्राइटेरिया भी दिया है गवर्नमेंट ने कि आप अगर से अराउंड 5,000 तक ब्लड डोनेशंस करने वाले हो इन अ ईयर, देन यू विल नीड एटलीस्ट 10 to 12 पीपल इन योर स्टाफ. देन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उतना उतना नंबर बढ़ता जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड अमंग टेक्नीशियंस एंड नर्सेज एंड अटेंडेंट्स एंड एवरीथिंग. तो उतना स्टाफ वहाँ पे सभी लोग जाने चाहिए ना काम करने के लिए, सिर्फ एक डॉक्टर से क्या होगा. ये ब्रांच कब गवर्नमेंट मेड इट अ वैलिड ब्रांच कब बनाई थी सरकार ने? से इट स्टार्टेड इन 2000. 2000. Yeah. What was the reason behind it? क्योंकि इससे पहले कौन संभालता था ये वाला काम? ये सारे पैथोलॉजिस्ट. Yes. ठीक है, तो क्यों बनाई सरकार ने ये? See, what happened is pathologists would take care of these blood bankings and everything, right? But जैसे जैसे टेक्निक्स सारी बढ़ने लगी, apheresis came into the picture. उतना सारा जो टेक्निक्स था ना, पैथोलॉजिस्ट को सिखाना over and above all that they would do was impossible. So the government of India and a lot of visionaries from the pathology field itself, who we still revere as our dear professors and all, उन्होंने सोचा कि हमको ये ब्रांच को एक सेपरेट फैकल्टी बना देना चाहिए. अब उसमें क्या हो रहा है कि पहले 1-2 सीट से शुरुआत हुई,
लोगों ने हिम्मत करके पैथोलॉजी करने के बाद में भी ये ब्रांच परस्यू करके डबल स्पेशलिटी कर ली, एंड देन उन्होंने जाके अपने सेंटर्स खोले, दे बिकेम प्रोफेसर्स, देन दे स्टार्टेड ट्रेनिंग, तो ऐसे ऐसे फिर वो बढ़ता गया. सो दैट इज हाउ. So would you recommend this branch to upcoming students जो इस ब्रांच के लिए सोच रहे हैं? आप recommend करोगे? आई वुड से कि Frankly. वेरी फ्रैंकली, आपको अगर लेना है ना, तो आप सबसे पहले तो अपना एक गोल सेट कर लो कि आपको ज़िंदगी से चाहिए क्या. आपको आरामदायक ज़िंदगी चाहिए, पैसा चाहिए, फास्ट पेस लाइफ चाहिए. व्हाट इज़ योर प्राइमरी गोल? इफ़ दोज थिंग्स आर सेट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि वेदर दिस ब्रांच इज मेड फॉर यू और नॉट. So इस ब्रांच में क्या pros and cons है? प्रोज ये है कि यू आर स्टैंडिंग एट द कस्प ऑफ प्रोवाइडिंग द वेरी बेसिक नीड ऑफ द एंटायर हॉस्पिटल. मीन्स आपके ब्लड के बिना, सेफ ब्लड के बिना कोई भी डिपार्टमेंट चलेगा नहीं. सो यू एक्ट एज द सेंट्रल डिपार्टमेंट फॉर द एंटायर हॉस्पिटल. सो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्राइड कि आई एम सो वेरी नेसेसरी फॉर दिस प्लेस टू रन. एक सेंस ऑफ लेगेसी आ जाती है उसमें. ओके, ये एक चीज़ हो गई. दूसरा इसमें प्रो ये हो जाता है कि पीपल हु आर इनटू रिसर्च, इनटू एकेडमिक्स, इनटू न्यूअर टेक्नोलॉजीज, तो वो लोग इसमें डाइव इन कर सकते हैं ये सोच के कि दिस इज समथिंग विच इज़ रियली रियली टेकिंग लीप्स एंड बाउंड्स इन टर्म्स ऑफ गेटिंग न्यूअर थिंग्स विद इन आवर मेडिकल सिस्टम. बिकॉज आप सोच लीजिए, कुछ कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं ना जो ठहर गई है आके. हमारी फील्ड ऐसी नहीं है. वी आर स्टिल प्रोग्रेसिंग. सिंस द लास्ट 20 years वी प्रोग्रेस्ड अ लॉट. लाइक इंडिजीनस थेरेपीज जो अभी तक भी इजाद हो रही है. CAR-T सेल का आपने सुना होगा. सो यू नो फॉर श्योर दैट इट इज़ अ थेरेपी विच इज़ रिसेंटली कम टू इंडिया, एंड इंडिविजुअलाइज्ड इम्यूनोथेरेपी, जो हमारी फील्ड और बाकी जो बायो इंजीनियर्स हैं उनकी वजह से ये सफल हो पाया है. अगर हम नहीं होते पिक्चर में तो ये कौन करने वाला था? हार्डली एनीबडी वुड डेल्व इनटू इट. सो दैट्स व्हाई वी आर पार्ट ऑफ द टीम हु आर एक्चुअली क्योरिंग कैंसर्स. वरना कैंसर को अभी तक भी एक इनक्योरेबल डिजीज माना जाता है. सो आई एम नॉट सेइंग आई एम क्योरिंग कैंसर, बट आई एम अ पार्ट ऑफ दैट टीम. सो दैट प्राइड इटसेल्फ इज वन ऑफ द थिंग्स दैट शुड गिव यू अ बिग प्रो. ओके, कॉन्स की अगर बात करते हैं, cons, like I said, the visibility issue. You will not be full-fledgedly probably regarded as a clinician. जैसे वो एक सारे बाकी के clinicians को एक अलग सी हवा मिलती है. May or may not be, you might get that thing when you're practicing, unless you have made a certain niche and a mark for yourself, and maybe you are delving into OPDs also. Because there are certain transfusion medicine specialists who have made a niche for themselves by getting into thalassemias and hemophilias and doing a lot of research. But that's in a very nascent stage. It's not come everywhere. तो इससे क्या हो रहा है ना, जब तक आप उस दिशा में नहीं जाओगे तब तक आप बैकग्राउंड में ही हो. एंड विजिबिलिटी का इशू है. सैलरी डिस्पैरिटीज, आई टोल्ड यू. जितना सैलरी शायद वो क्लिनिशियंस को मिलेगा उतना आपको शायद ना मिले. ठीक है, सो दोज थिंग्स आर देयर. बाकी एक कौन ये हो जाता है कि योर लाइफ कुड बी स्लो पेस्ड. ओके, जैसे सर्जन्स को रात में कभी भी उठ के बुलाया जा सकता है, इमरजेंसी है आ जाओ. देर आर टाइप ए पर्सनालिटीज़ होती है, टाइप बी पर्सनालिटीज़ होती है. सम पीपल आर लाइक गो गेटर्स. नहीं नहीं नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है. एवरीबडी इज़ नॉट लाइक दैट. इफ़ यू आर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स टू टेक लाइफ ईजी, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है, तो ये आपके लिए प्रो बन जाता है. बट इफ़ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु लाइक्स एन ईजी गोइंग लाइफ, देन ये आपके लिए कौन बन जाता है. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. इस ब्रांच के विच आर द top 5 बेस्ट colleges, institutes for MD transfusion medicine and DNB? See, this is my opinion completely. Yeah, I would please. not say कि this is the exact list, but जितना मैंने देखा है, नाम तो बहुत सारे हैं. सबसे पहला तो आता है SGPGI लखनऊ, बिकॉज वहीं से वो सारा शुरू हुआ था. ठीक है, देन देर इज़ PGI चंडीगढ़, देन देर इज़ एम्स दिल्ली, देन देर इज़ टाटा हॉस्पिटल, एंड देर इज़ Manipal, KMC Manipal. So 5 you said, these are the 5. वैसे और भी बहुत सारे हैं. And DNB? DNB I would say Medanta Gurgaon is good. Okay. And DNB के लिए I have not explored too many as such. Does this branch have a super specialty also? This branch itself is a super specialty. ये डेवलप ही ऐसे हो गई थी कि it was not able to contain in pathology branch.
तो उन्होंने इसको एज अ टर्मिनल सुपर स्पेशलिटी ब्रांच बना दिया, जिसके बियॉन्ड आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. नाउ यू लुक एट मी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग बियॉन्ड MD ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन. आई डोंट नीड टू, बिकॉज इसके आगे कोई ऑप्शन है भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं है. एंड स्टिल आई एम एट द हेड पोजिशन. फिर हाउ डू यू नीड? डोंट नीड. हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सम पीपल कैन डू फेलोशिप्स इन दिस. ओके, फेलोशिप्स इन थेरेपेटिक एफेरेसिस है, पेशेंट ब्लड मैनेजमेंट है, देन देर आर सर्टन क्लिनिकल हेमाटोलॉजी फेलोशिप्स अवेलेबल. ऑल्दो दोज ऑप्शंस आर वेरी लेस, बट व्हाट हैपेंस इज अगर किसी को और कॉन्फिडेंस चाहिए, उनके कॉलेजेस ने एफेरेसिस में इतना रोबस्ट ट्रेनिंग न दे पाए हों ड्यू टू सम रीजन, then they might opt for that. That would serve as an additional feather in their cap, as well as give them a robust CV and some more confidence to practice with their skill set. What was your journey like after MD? Okay. I mean, you were a head of a department at a very young age. When I passed out of Tata, okay, Tata itself, you know, is a big name in the country, and not just the country, everywhere we know. अब इसमें क्या हो रहा है कि they give us such deep training in Tata. एफेरेसिस की मैंने आपको बात की थी. They are providing us with such amazing tech there. चाहे आप कोई सा भी ले लो, एफेरेसिस का मशीन जो होता है ना, डिफरेंट कंपनीज आर देयर इन द मार्केट. आप यू नेम इट एंड वी हैव दैट मशीन, राइट? एंड सिमिलरली फॉर ब्लड प्रोसेसिंग, जिसको हम क्रॉस मैचिंग और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के माध्यम से वो सारा करते हैं. देन वी डू ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड एवरीथिंग. सो ऑल ऑफ दीज डिफरेंट लैब्स दैट वी हैव, वेयरइन वी आर ensuring that the blood that patient will get is going to be safe enough for transfusion. तो उसके लिए भी बहुत सारी एडवांस्ड इम्यूनोहेमाटोलॉजी की मशीन्स आती हैं. टाटा हैज़ एवरीथिंग. ओके, सो आपको अगर ये सारी मशीन्स पे अगर ट्रेनिंग मिलती है, ओके, so that makes you a well-rounded specialist to go out and practice anywhere. Okay, फिर चाहे आपके पास सारी मशीन्स ना भी हों तो भी एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि अगर आपको वो मशीन कहीं और इंस्टॉल करनी भी रही इन अ वेरी नेसेंट सेटअप, यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ दैट बिकॉज दे हैव ट्रेन्ड यू एज सच. सो नाउ जैसे ही मैं टाटा से पास आउट हुई, आई वेंट टू SMBT हॉस्पिटल इन नासिक. Okay, there they entrusted me with the task of setting up their apheresis from scratch because उनको ना सिर्फ platelet pheresis करना था, they wanted to do stem cell harvest as well as CAR T cell procedures because CAR T cell was very new and we wanted to get enrolled in the multicentric trials. Okay, so वो आई सॉ थ्रू द होल प्रोसेस, मशीन आने से इंस्टॉल होने तक, उसका सारा SOP बनाने से, स्टाफ को ट्रेन करने तक, डूइंग द फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ प्लेटलेट फेरेसिस टू द CAR T cell procedure and seeing that the CAR T cell multicentric trial also was successful. And when that first multicentric trial was successful, जो हमने टाटा के कोलैबोरेशन में किया था, I was so happy because we were able to save a 17-year-old boy जिसका कैंसर क्योर हो गया. And it came in the newspapers and our whole team was applauded. And there was a program held in IIT Powai in April of 2024, I guess. उसमें we were specially invited by, you know, the government of India, जहाँ पे हमारी president honorable श्री द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, हमारे गवर्नर साहब थे. So everyone was there to felicitate us, applaud us, the whole team who was participating in this procedures and trials, and it was a moment of joy for us because इससे बेहतर और कोई क्या मांग सकता है. I mean, I don't see any other consultants in other fields getting this kind of respect. So अगर ये चीज़ मुझे मिलती है, being a transfusion medicine specialist in her very nascent stage of practice, and then taking that and moving on to work at other centers which are even more robust. Like I moved on from SMBT and worked in a standalone center as well, Plasma Blood Center in Mumbai. Then there was SL Raheja, Fortis. So all these places where I worked as the head of that place, they all looked up to me as a person of authority, because they saw that I could see through these procedures even in the very beginning stages of my career. And that is where the whole authority and the respect builds up. और उसके बाद में आप कहीं पे भी वो skill set and CV ले जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता. That was something that I really take pride in, and I'm blessed, I would say. My question was, I do applaud you for that. My question was that at such a young age, you got to be the head there. So was
आई मीन इसमें सीनियर्स नहीं होते? सी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन जो फील्ड है ना, दैट itself is so nascent कि not all centers yet have transfusion medicine specialists only. इससे पहले जो लोग ब्लड सेंटर्स संभालते थे वो पैथोलॉजिस्ट थे या तो MBBS थे, ठीक है. There will be a time when they will phase out. So when they phase out, the first preference, if at all that center values advanced cellular therapy and all the newer techniques and apheresis and robust blood banking, they will replace those people with good transfusion medicine specialists only. So that is where I came in. Doesn't DM Himat actually overlap with yours? To some extent, yes. उनके पास अथॉरिटी होती है कि पेशेंट को आप ट्रीट करो ऑल द ब्लड डिसऑर्डर्स, ठीक है, ब्लड डिस्ट्रेसियाज, थैलेसीमियाज, हीमोफीलिया, सिकल सेल एंड मैलिग्नेंसीज एंड ऑल, वो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं OPD IPD बेसिस पे. लेकिन जो ब्लड की रिक्वायरमेंट्स होगी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, दैट विल बी डेल्ट बाय अस. कोलैबोरेशन में हमको ये करना पड़ेगा कि इफ एट ऑल वी आर प्लानिंग सर्टन स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स फॉर देम, फॉर एग्जांपल स्टेम सेल हार्वेस्ट या फिर कार्टी सेल हार्वेस्ट, सो ऑल ऑफ दैट वी विल प्लान एज अ टीम. So you must be having some regular fights with pathologists. I wouldn't say that. No. Pathologists are very sweet, honestly. No, as per job competitions. No, because I've understood the fact that, I mean, if I just say it loud, that basically transfusion medicine is a metropolitan branch. You can only get jobs in a good corporate hospital. And if we go into tier 2 and tier 3, they mostly prefer pathologists because there's plenty of them. And for you, they have to follow a lot of regulations. So how do you deal with that? See, tier 2 and 3 cities में, depending on how robust the setup is. अगर suppose I am in Pune 301, tier 2 city अगर नागपुर है, suppose नागपुर पे बहुत सारे अच्छे सेंटर्स हैं, ब्लड सेंटर्स, ओके, एंड इफ दे वांट टू डू एफेरेसिस एंड ऑल, वो तो सिर्फ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट की ही स्पेशलिटी है, तो आप पैथोलॉजिस्ट को वहाँ पे ले ही नहीं सकते. अगर आपके पास वो मशीन है, मतलब लाजमी आपको ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन स्पेशलिस्ट को ही लेना पड़ेगा, पैथोलॉजिस्ट कोई उसके लिए अप्लाई करेगा ही नहीं. But I'm sure this machine actually costs a lot. Yes, it does, absolutely. So in review of that, you need to have some kind of big backup to buy that kind of machine. Automatically it means you have to be a corporate hospital. Yes. If we just talk about smaller... I would beg to differ there. See, जिसको गरज है और जिसको अवेयरनेस है ना, they will take that machine irrespective of the money. Because I'll tell you my own example. I worked in a standalone blood center, okay, which was Plasma Diagnostic Blood Center. The thing was that even though it was not attached to any specific hospital, still that center had 3 apheresis machines by its own, and we would do platelet pheresis procedures there almost 2 to 4 every day. And they also had the license for plasma pheresis, which was convalescent plasma. जब हम वो लेते थे कोविड के टाइम पे, they have done those procedures as well. I was not associated with that center back then, but they have done those procedures also. So and that center was running for 32 years almost, ठीक है. सो आप ये सोच लीजिए कि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स ही इतना पैसा लगा के उसको लाएंगे और उसको चलाएंगे. पीपल हु आर डेडिकेटेड, who understand the concept and the need of it, they will do it irrespective of the regulatory and the financial requirements. Because पैसा तो यहाँ वहाँ से आप उठा सकते हो मार्केट से. कितने की आती है मशीन? मशीन सी current rates I would say anywhere between 50 lakhs to 1.2 CR. बट इससे पहले जब भी उसकी डिमांड थोड़ी सी कम थी, सो तभी मुझे लगता है 30 लाख से 50 लाख के बीच में आ जाती थी. एंड दैट टाइम पीपल हैव इन्वेस्टेड देम. हाँ, और एक और चीज़ थी उस टाइम पे, क्या होता था कि जो मशीन की कंपनीज थी ना, दे वुड गिव अस द मशीन्स ऑन अ रीएजेंट रेंटल बेसिस. ओके, तो आपको मशीन पर से खरीदनी नहीं पड़ती थी, आप उनके किट्स ले लो, तो उसके और एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ किट्स आपने उनसे परचेज कर लिए, तो वो मशीन आपको ऐसे ही चलाने के लिए दे देंगे. सो दैट इज़ हाउ पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट, बिकॉज दे वांटेड द मशीन्स, यू नो, उसकी प्रचलित होनी चाहिए. और फिर उसके बाद में फिर यू नो, नाउ दैट द मशीन्स आर इन वोग एंड एवरीबडी वांट्स इट बिकॉज ऑफ द यू नो, एक कार्टी सेल का सबको एक समझ में आया है कि कितना नेसेसिटी है आज के ज़माने में, इफ़ वी वांट टू क्योर कैंसर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो पीपल डू इट.
Where do you see this branch going in the next 10 years? In next 10 years, I think the demand might slow down a little bit. Really? Why? Why? Yeah, because see, tier 1 cities जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका ये है डिमांड है और सैलरी है, that is almost getting full. Like for example, if I want to work in Mumbai, okay, that is one of the most in demand tier 1 city. If I happen to tell you how many vacancies are coming out for transfusion medicine specialist in that one city, as a even to work as a consultant or a blood transfusion officer, whether it be in a corporate hospital or a standalone blood center, anywhere, or even in a government center, it will not be more than 3 to 5 vacancies in a year. Similarly, आप उसको सारे tier 1 cities में divide कर लो across India. 6 से 7 तो tier 1 cities हैं. जितने भी, अगर 10 भी पकड़ लिए चलो, अप एंड कमिंग सिटीज़ या गुड टियर 2 सिटीज़, तो आप कितने लोगों को प्लेस कर पाओगे? एंड देयर आर अराउंड 200 स्पेशलिस्ट कमिंग आउट ईच ईयर. सो दोज पीपल विल हैव टू अनवांटेडली पुश टूवर्ड्स टियर 3 सिटीज़. बट वहाँ पे लोगों को इतना रोबस्टनेस चाहिए ही नहीं, उनको इतनी डिमांड ही नहीं है उतनी एक्सपर्टीज़ की. वहाँ पे सादे MBBS से काम चल जाएगा बिकॉज गवर्नमेंट ने वो क्राइटेरिया दे रखा है. तो फिर वो वहाँ पे जा ही नहीं पाने वाले, वो काम कहाँ करेंगे? सो टेल मी, आफ्टर 10 years व्हाट विल बी द सिनेरियो अगर अभी ही ये हाल है? Don't you think that like post 10 years, this CAR T therapy will also move to second and third tier cities? एब्सोल्युटली, बट उसके लिए आपको हॉस्पिटल्स एक्सपैंड करने पड़ेंगे बिकॉज दीज सेंटर्स जहाँ पे CAR T सेल थेरेपी होती है, वहाँ पे पूरी बड़ी सी टीम लगती है. यू नीड ICUs, यू नीड गुड बेड्स, क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी यूनिट्स जो होते हैं दोज हैव टू बी वेरी कंटेन एनवायरनमेंट्स, completely infection free and everything. You need to have trained nurses, trained staff, round the clock services, और प्रॉपर ब्लड सेंटर कि सिर्फ वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की एफेरेसिस मशीन और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है. पूरा रोबस्ट सेंटर स्टार्ट टू फिनिश चाहिए. ओके, तो ऐसे कितने सेंटर खड़े हो पाएंगे वहाँ पे कि हम ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन को स्पेशलिस्ट को वहाँ पे प्लेस कर सके? So I think expansion of hospitals is the only way out. Exactly. Does the government support in any kind of way? Government does support, but you do Like understand we've been that talking अपना about corporate hospitals a lot. Do government hospitals also have these machines? government hospitals are resource constrained places to begin with, Okay. right? तो आप उनसे बहुत expectations नहीं रख पाओगे. So I think if I actually put it in a nutshell, ये branch बनी है metropolitan के corporate hospitals के लिए, And tier 2 cities also के because corporate hospitals के लिए. absolutely, yes. Now it's a rapid fire round. Okay. Okay, very two simple two rules. You have to be super spontaneous and super truthful. Mm. One opportunity you regret not taking. I regret not writing more books when I actually had the time. Would you advise your daughter, should she become a doctor or not? I would recommend it with caution Hmm. because इसमें बहुत सारे challenges भी हैं लेकिन बहुत सारी खुशी भी है. So उसकी personality के लिए जो best होगा उससे वो करना चाहिए. So I would never discourage her, but I would never completely push her. Your most controversial opinion about relationships. Controversial would be that चाहे आप किसी को कितना भी प्यार कर दो, अपने आप को पूरी तरीके से उसके हाथों में सौंप मत दो. Because you don't know at what point things might fall apart. So keep some to yourself and always hold on to your family and friends because when things go sideways, you will need support and these people are going to be there for you. If you could swap lives with someone for a day, who would it be? Oh, this is a very controversial one. Donald Trump. Yeah, I'll tell you the reason why. I don't know if I'm supposed to, but I will. You see what's going on in the world, right? Had I been in his place at this point in time, I would try to set things straight for everyone. Because उस एक आदमी के decision से बहुतों की जिंदगी सुधर जाएगी, honestly. The first thought that hits you when you woke up today. Oh my God, I have to do so many things today on this trip. One song that gets you through a 14-hour day. I would say it's not a singular one. Basically, see, I'm a millennial. हमारे लिए 90s के सारे गाने बहुत ही सुनहरे थे. But I cannot choose one of them because those songs actually had melody and meaning. Yeah. So it could be based on my mood, but one of them would be from 90s only. Best advice your mother ever gave you. Never apologize for your wants and needs ever. Thank you so much, Dr. Afri. I think you have given a lot
of information regarding transfusion medicine, and I'll tell you, I learned a lot from you today. Thank you so much. And again, I'll say that you have a very different perspective about thinking, and I really appreciate that. Thank you so much. And thank you so much, guys. The branch that nobody should talk about, there's hardly any information on internet. Okay, and Dr. Afeen here has given us everything we need to know about this branch. Share it with a friend who wants to take transfusion medicine as his or her specialty in the upcoming NEET PG counseling. And I do believe that this episode is going to be helpful for everyone. And as always, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much, and God bless you.